Adarniya Mantri ji, Honorable B.D. Kalla, the Minister for Culture in the Government of Rajasthan, Namita Gokhale, the Chair of the Jury, ladies and gentlemen, Mr. A.J. Thomas, thank you all for being here today on the occasion of the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award. We're absolutely delighted that har saal we have this wonderful award which has been instituted in association with the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Trust. Siddharth and Sethia ji are here in memory of their grandfather. When they first came to us some years ago, we were absolutely delighted to associate with this trust because we knew that we needed to do much more for poetry. And Namita was very, very keen that we continue year on year to be able to use this to provide that focus on writing, not just in one or the other Indian language, but across languages. And we've had over the years some fabulous poets who we've been able to honor on this occasion. To celebrate and promote poetry, the Jaipur Literature Festival, in association with Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Foundation, and a distinguished jury comprising of Namita Gokhale, Sanjoy Roy, Jayaprakash Sethia, Siddharth Sethia, continues its annual prize in memory of Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia. His immortal poem, Dharti Dhora Re, has been used in the documentary film Land of Sand Dunes by Gautam Ghosh, which was awarded the Golden Peacock Award by Government of India. Dharti Dhora Re was performed in a musical in the 2016 Republic Day Parade in New Delhi before the President of France and the Prime Minister and President of India. May I invite Namita Gokhale to say a few words before we start this evening. But before that, can I get the Dharti Dhora Re film played? मातृभाषा को महान गीत है धरती धोरानी, जो को राजस्थान में और भारत के सब प्रांता में और बाहर विदेशा में भी कम 15 करोड़ आदमी इन गीत में गावे। और कठे जार जंगला में अनपढ़ आदमी बैठा है, मैंने पूछ लो तो मैं कन्हैया लाल सेठिया को नाम जाने इन धरती का कारण। इनको शीर्षक है धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी। आ तो सुरगा में शर्मावे, ई पर देव रमण में आवे, ईरो जश्न नारी गावे धरती धोरानी। सूरज कणकण में चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निचरा वड़ कर जावे धरती धोरानी। काला बादलिया गहरावे, बिरखा गुबरिया गमकावे, बिजली धरती ओला खावे धरती धोरानी। दूर दूर बाजरी ओ लहरावे, मक्को झालो देर बुलावे, उधर दोनों हाथ लुटावे धरती धोरानी। पंछी मदरा मदरा बोले, मिश्री मीठे सुशियों घोड़े, झीनू बाहरियो पंपोले धरती धोरानी। नारा नागोरी हिद ताता, मधुआ ऊँट रमता काथा, इरे घोड़ारी के बाता धरती धोरानी। ईरा फल फुलड़ा मन भावण, ईरे झीणू आंगण आंगण, बाजे सगला सुमड़ बागन धरती धोरानी। ईरो चित्तो डोगड़ रूठो, ओ तो रणवीरा लो फूटो, ईरो जोधा ऊंदो फूटो धरती धोरानी। आबू आगे वे परवाने, दूनी गंगा जी ही जाने, उगो जैसलमेर शिवाने धरती धोरानी। ईरो बीकानो गरबीलो, ईरो अलवर जबर हटीलो, ईरो अजय मीर भड़कीलो धरती धोरानी। जयपुर नगरिया में पटरानी, कोटा बूंदी कदन जानी, चामल कहवे आरी पानी धरती धोरानी। कोनी नाव भरपूर छोटो, घूमो सूरज मगरो घोटो, खाई मार फिरंगी मोटो धरती धोरानी। यीशु नहीं मालवो न्यारो, मोवी हरियाणु है प्यारो, मिलतो तीना रो उनियारो धरती धोरानी। ई पर तगड़ो मनड़ो वारा, ई पर जीवन प्राण उवारा, ईरी गजा उड़े गिगनारा मायड़ कोड़ानी। इन्हें मोटिया थाल बगावा,
ईरी धूल दिदार लगावा, ईरो मोटो बाग सरावा, धरती धोरानी, ईरा सतरी आन निभावा, ईरा पतने नहीं गजावा, ईने माथो भेड़ चढ़ावा, धरती धोरानी, धरती धोरानी. Thank you. In our first and only jury meeting, which was attended by the jury members, Sukrita Paul, who's not with us here today, Namita Gokhale, Nirupama, Dutt, and A.J. Thomas, and of course the Sethia family, we unanimously chose this year's Poet of the Year. To announce that, may I invite the head of the jury, the chair of the jury, Namita Gokhale, to come and say a few words. Namita. Dear friends, Honorable Minister, it is very satisfying to see so many poets in the front row. I can read out a roster here from Naveen Kishore to Sudeep Sen to, I'm sure Chandrahas has written poetry, to Ruth Patel, to Jeet Thayal, to C.P. Devalji, to our dear friend, there are just so many people here. Nand Bharadwaj ji, I'm missing out some more poets, I'm sure, in the back rows. So this is for across languages, and it gives me great joy that we are honoring my dear, respected friend, Ranjit, today. The citation will be read out later by A.J. Thomas, but I'm just giving you the general background. I may overlap with some of the things Sanjoy has already said, but I'm honored and delighted to be here for the 7th award ceremony of the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award. Established in the memory of the Rajasthani and Hindi poet, Shri Kanhaiya Lal Sethia, it has in the past honored poets of the stature of Jayanta Mahapatra, Surjit Patar, Salma, Anamika, Arvind Krishna Mehrotra, and others. The great poet Mahakavi Sethia ji was rooted in the language and the landscape of Rajasthan but belonged to the world. I would like to pay tribute to his enormous legacy, which includes 42 books in Hindi, Urdu and Rajasthani. His poem, which you heard recited just now, Dharti Dorani, is almost an anthem for Rajasthan. I cannot think of a worthier yes, a clap for this should be there. Because it is here in Rajasthan, in the both cosmopolitan yet rooted heritage of Rajasthan, that the Jaipur Literature Festival is able to find and remain grounded. I cannot think of a worthier recipient for the prize than Ranjit Hoskote. Poet, cultural theorist, art critic, independent curator, he's been honored with the Sahitya Akademi Golden Jubilee Award and the Sahitya Akademi Prize for Translation. To quote a perceptive reviewer, from his poems, Hoskote gives the impression that he is forever looking to find and yet elude his own center of being. I don't know if he feels like that about himself, but I do find a word of truth in it. It is this quality of elusiveness, of tangential vision that so appeals to me personally. Thank you, Ranjit, for all you do to enrich poetry and the arts, apart from your own writing practice. I would also like to commend and congratulate Sri Jayaprakash Sethia and Siddharth Sethia, who is much too modest to come on stage for some reason, for establishing and nurturing this important and inspirational prize in memory of Mahakavi Sethia, who blesses our festival every year. Thank you. May I now invite Shri A.J. Thomas to read out the citation of the award to Ranjit Hoskote. A.J. Do we have the citation here?
citation for the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award 2022. Ranjit Hoskote has emerged as the winner of Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award 2022 following a unanimous decision by the jury committee. Ranjit Hoskote, besides being one of the most influential English language poets in India, is also a renowned literary translator, anthology editor, prose stylist, and art critic and curator. His poetry follows in the traditions of pioneers of modern English poetry in India, such as Nissim Ezekiel, Do Moraes, Arun Koladkar, and others. It makes a mark of its own through finely wrought, well-chiseled wordcraft and the deft employment of images and metaphors. He has advanced far on the trail he has blazed for himself and has reached sublime heights. His poetry is noted for the fusion of form and content, sometimes the content determining the form. Hoskote has 8 collections of poetry and 2 collections of translations of poetry. He has been associated with PEN All India Centre, the Indian branch of the PEN International, from 1986 and has been its General Secretary. He also edits its journal Penumbra. He has also been active with Bombay Poetry Circle, also from 1986, and was its president from 1992 to 1997. As an art critic, Ranjit Hoskote has been placed among the 5 most outstanding critics of Indian art over the last 6 decades. He is credited with having contributed significantly to shaping the current art discourse in our country. He is noted for his cultural activism, always upholding the autonomy of the artist against all kinds of pressures, political or societal at large. Hoskote has been internationally recognized for his poetry, including fellowships and residencies at the University of Iowa, the Villa Valberta, the Goethe Institute, Polnisch Institute, BAK, Basvis, Actuelle Kunst, Utrecht, among others. Ranjit Hoskote won the Sanskriti Award for Literature in 1996. The first prize in the British Council Poetry Society organized All India Poetry Competition in 1997. The rare honor of the standalone Sahitya Akademi Golden Jubilee Award in 2004 and Raza Award for Literature by the S.H. Raza Foundation in 2006. The jury committee feels honored to confer on this versatile talent, Ranjit Hoskote, the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award 2022. Thank you. Before we play the film and before I ask the minister to give the award, may I ask Nirupama to please read out the message that the Chief Minister of Rajasthan has just sent us. बड़े मान से मैं मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ रही हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत 12 मार्च 2022 को महाकवि कन्हैया लाल सेठिया फाउंडेशन के सौजन्य से महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पोइट्री अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। कालजयी गीत धरती धोरारी के प्रणेता पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया जी के नाम से अवार्ड प्रदान किया जाना अपने आप में गौरव की बात है। इससे अन्य रचनाकारों को भी उत्कृष्ट सृजन की प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर मिलता है। ये शुभ है कि इस वर्ष का अवार्ड सुप्रसिद्ध पत्रकार लेखक श्री रंजीत हॉस्कोटे को प्रदान किया जा रहा है। आशा है इस समारोह के कार्यक्रम स्मृति शेष सेठिया जी के साहित्यिक सरोकारों को व्यापक बनाने के साथ ही साहित्य सेवियों को नया दिशाबोध कराने वाले
होंगे। इस अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में याद किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं स्वर्गीय श्री सेठिया जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए पुरस्कार पत्रकार लेखक श्री होस्कोटे को बधाई देता हूँ और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। Thank you. Can we play the film, please, Vicky? Sense of being somewhat embattled as a practitioner of poetry. The marginal, elitist, a minority interest, that it's lost the place it once had in culture at large. Then there's suddenly another school of thought which assures you that, poetry is the acme of literary effort and so on and so forth. But I just kept thinking, as I was working on the book, it just kept coming to me again and again. How do we as poets claim the attention of our readers, of the public sphere, if you will, when we are just shaped and seized by the news cycle, by the buzz of data, by the rigorous claims of non-fiction, by the seductions of fiction? How do we find our place? So I began to envision us, poets, or the poet, as some kind of ill-favored, ill-starred, deformed, cousin gone wrong of prose, so hunch prose, that sort of thing. And by the kind of association of ideas that we all work with, it brought me back to a figure that's haunted me forever, which is Quasimodo from Victor Hugo's Hunchback of Notre Dame. And I've been fascinated ever since I read the book pretty early on. Books release themselves, as you know, to us over the years in different ways. And I was always struck that this ill-favored figure also made this incredibly beautiful music, the carillon of bells that he sets off. He's, this amazing bell ringer who also has this kind of strange aesthetic ambivalence and dissonance. So these are some of the thoughts that go into Hunch prose. May I invite the Minister, Honorable B.D. Kalla, to please say a few words and then present the award to Ranjit Hoskote. Respected Sanjay Roy ji, respected Srimati Namita Gokhale ji, dear Siddharth Sethia ji, dear Sri A.J. Thomas ji, respected Nirupama Datta ji, and Sri Ranjit Hoskote ji, जिनको आज अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले तो कन्हैया लाल जी सेठिया की स्मृतियों को वंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मुझे उदयपुर जाने पर एक व्यक्ति ने एक कांच की शीशी दी, उस पर लिखा हुआ था, कोनी कोरो नाम रेत्रो हल्दी घाटी, कोनी कोरो नाम रेत्रो हल्दी घाटी, अठे उग्यो इतिहास पूजी जे एंड्री माटी। यानी मातृभूमि की मिट्टी को उन्होंने इतना ज़बरदस्त मान दिया
कि आज भी जो भी टूरिस्ट, डोमेस्टिक हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, जो भी हल्दी घाटी जाता है वहाँ की मिट्टी लेकर के अपने मस्तक पर लगाता है। इतना महत्व है हल्दी घाटी की माटी का। कन्हैया लाल जी सेठिया का भी मैं गीत सुन रहा था, आ तो सुरगाने शरमावे इन पर देह रमन ने आवे, ईरो यसनर नारी गावे धरती दोरानी, ईरो बीकाणो गरवीलो, ईरो अलवर जबर हटीलो, ईरो अजमेर बड़कीलो धरती दोरानी। क्या ज़बरदस्त! जैसे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने जनगण मन की रचना करके राष्ट्रीय गीत लिखा, उसी प्रकार धरती दोरानी गीत राजस्थान का जनगण मन बन गया है और ये राज्य का गीत बन गया है। कन्हैया लाल जी सेठिया एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने सुजानगढ़ में जन्म लेकर प्रारंभिक जीवन वहाँ बिताया और उसके बाद न केवल राजस्थानी में बल्कि हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में सब जगह अपनी कलम चलाई और उनकी रचनाएं आज भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको एक उनकी रचना पढ़ के सुनाता हूँ। अरे घासरी रोटी थी जब बन बिनावड़ो ले भाग्यो, नाना सो हमरियो चीक पड़ो राणारो सोयो तुक जाग्यो, आज बिलक तो देखूँ हूँ जब राज कवर ने रोटी ने, आँख्या में आंसू भर बोलिया में लिखसूँ अकबर ने पाती, पण लिखूँ कि यहाँ जब देखूँ हूँ आ राड़ावल ऊंचो हियो लिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में। ऐसा लग रहा था कि अब महाराणा प्रताप जैसे कोई समर्पण करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात के बारे में पीथल जो बीकानेर का था उसने ये विचार जब देखे तो उन्होंने हाथों हाथ पड़ूतर एक चिट्ठी लिखी। वो थी, हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूँ भोर उजाड़ा में भटकूं पण मन मारी याद आवे रेवे, हूँ रजपूतन रोज आयो हूँ, रजपूती कर चुका हूँ ला, और शीश पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान चुका हूँ ला। ऐसी पीथल ने जब बात लिखी तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप ने जो है घास की रोटी खाकर मेवाड़ की रक्षा की, मातृभूमि की रक्षा की और स्वाभिमान की रक्षा की। ऐसे महाराणा प्रताप थे। तो कहते हैं ना, जान पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना बहुत ऊंची है और सेठिया जी जो है वो निश्चित रूप से, मैं कलकत्ता में उनसे कई बार मिला, राजस्थान में भी जयपुर आते थे तो बराबर उनसे मिलने जाता था। वो वास्तव में एक साहित्य मनीषी थे और उनका गहरा लगाव साहित्य से था। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। उनकी स्मृति में मैं भाई सिद्धार्थ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे कवि बहुत हुए हैं, कवि बहुत इनाम लेते हैं करते हैं, लेकिन ट्रस्ट बनाकर उनकी स्मृति को बरकरार बनाए रखना और 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष देना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है भाई। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो एक ग्लोबल फेस्टिवल बन गया है, इस फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल जी सेठिया की स्मृति में होस्कोटे जी को आज जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं, कवि हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, जैसा मुझे बताया गया, लिखी हैं, उनको जूरी ने पुरस्कृत किया है। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार, आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर पड़ा हुआ है। किसी के पास हाइड्रोजन बम है, किसी के पास ऑक्सीजन बम है, किसी के पास और कोई रासायनिक बम है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से ओतप्रोत कन्हैया लाल जी सेठिया थे, जो फ्रीडम फाइटर थे। उनको पद्मश्री मिली, अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आज पूरी दुनिया एक ही अमोघ अस्त्र से बच सकती है, उसका नाम है अहिंसा। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आज यूएनओ ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस घोषित किया है। तो अहिंसा ही देश को और विश्व को एक रख सकती है, विश्व में शांति ला सकती है। इसलिए कन्हैया लाल जी सेठिया ने एक बहुत अच्छी रचना कही है
दीप रहे जले बिना उजास नहीं हुए, दीप जलाए बगैर प्रकाश नहीं होता, बीज रहे खपिया बिना विकास नहीं हुए, और आदमी खप तपर बने हैं 100 की, किन्हीं कने भी बने बनाए इतिहास नहीं हुए। और वे आज़ादी और शांति के प्रतीक थे, वे हमेशा अहिंसा को आगे बढ़ाकर चलना चाहते थे। उन्होंने उर्दू में भी कई बातें लिखी जो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ये लिखा था कि ताजमहल के बारे में उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। उन्होंने आपके घास की रोटी के बारे में तो मैंने गुलची और ताजमहल जड़ी महताऊ कविताएं उन्होंने उर्दू में लिखी। उन्होंने इसके साथ साथ बंगाली और मराठी में भी कुछ कलम चलाई। ऐसे रचनाकार, ऐसे साहित्यकार, खासतौर से राजस्थानी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। मैं अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी रचनाएं जो हैं, जो अमर रचनाएं हैं, उनको हम अपने हृदय में संजोएं और उसके आधार पर चलने का प्रयास करें। देखिए, साहित्य एक ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूं, संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। संगीत, साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले व्यक्ति पशु के समान होता है। हमारा देश और ख़ास तौर से जो साहित्य में रुचि रखने वाले वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, वो इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनका संगीत, साहित्य और कला में मुख्य रूप से रुचि है। और इसी के कारण आप देख रहे हो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर मिलते हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और विश्व में शांति, अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश देता हुआ, एक दूसरे को सहयोग देता हुआ, जैसा हमारे वेदों में कहा गया है, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदारा चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। यानी ये तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति उदार चरित्र वाली है, जिसमें सारा वर्ल्ड, सारा विश्व एक इंटरनेशनल ब्रदरहुड की तरह, एक पूरे कुटुंब की तरह है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम को साकार करने वाले इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए मैं संजीव राय जी को और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और पुनः हॉस्कोटे जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि उन्होंने कन्हैया लाल जी जैसे महान साहित्यकार के नाम का पुरस्कार प्राप्त किया। ये पुरस्कार आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। मैं चाहता हूं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करें और आगे से आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद। जय हिंद। कला जी, यहाँ पे रंजीत, may I ask you to come, jury members, Siddharth, Namita, can we have the award? पहले अवार्ड Gosh, I have to say I am truly overwhelmed. Honourable Minister, members of the
Honorable Minister, members of the Sethia family, distinguished members of the jury, and friends and colleagues. And I have to say, it's absolutely marvelous to find this whole family of poets here in the front row and elsewhere. I do want to say how overwhelmed I feel, and also that it's a very, very special honor. In no small measure because it continues the legacy of a figure, a literary figure who contributed to 3 languages and more, to Rajasthani, to Hindi, and to Urdu. And as someone who believes that multilingual experience is crucial to our literary creativity, this has deep resonance for me. We may all choose to write in one language, as I do, but we are nourished by many, many others. And हर एक भाषा अपने आप में सीमित नहीं होती है, इसमें मिश्रित होती हैं कई और भाषाएं। जब मैं राजस्थानी की कसूर जो सुन रहा था तो मुझे आभास हुआ कि यहाँ खड़ी बोली भी है, गुजराती भी है. There were so many different languages that one heard and one celebrated in that sense. So it's in that spirit and that spirit of humility that I would accept this award, and thank you again. And I'll read a poem. ये मेरी किताब है हंस प्रोज, इससे मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ, Sovereign. Plucking sunsets from the water, the horned sovereign half stamps, half slides across the beach, stopping to dig, claw, rake. What washes up is drilled shale, lost static parsed from gulf to strait, plastic worlds in whose wake gagged dolphins trail, scarred humpback whales whose shadows will drift unmoored upthrowing glaciers. What washes up is news of the cracked ice, across which a shivering fox is making her way from Svalbard to Nunavut, leaving her paw prints on frozen currents, to a shore stippled with burst nebulae, a shore that on a compass dizzy with wind-scattered directions she can and can't call home. Thank you very much indeed. Dhanyavad, shukriya. Thank you so much, Ranjit, and congratulations. Can I ask Jaipur Sethia ji to come and say a few words of thank you? जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। राजस्थान सरकार के वरिष्ठतम मंत्री माननीय कल्ला साहब, उत्सव मूर्ति प्रख्यात साहित्यकार रणजीत जी होस्कोटे, जयपुर लिटरेरी फेस्ट के कर्ता धर्ता श्री संजय जी रॉय, जूरी मेंबर की अध्यक्षता श्रीमती नमिता जी गोखले और विद्वान जूरी मेंबर को हृदय के अंतःस्थल से प्रणाम नमन। महाकवि सेठिया के साहित्य की गंगा अबाध गति से निरंतर वर्ष बहती रहे। हर वर्ष ये सम्मान देश के विभिन्न प्रांतों में दिया जा रहा है, इसका अपना एक अलग ही महत्व है। महाकवि के साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो, यही मेरी कामना है। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद जो पधारे। Thank you very much, Jaipur Sethia and Siddharth Sethia, the force of nature behind the award. B.D. Kalla ji, thank you so much for coming to the festival. A.J. Thomas, Nirupama Dutt, on behalf of Namita Gokhale, William Dalrymple, and all of us at the Jaipur Literature Festival, Ranjit Hoskote, big congratulations. Thank you for accepting the award. Thank you all. The video will play. In the
the first instance, which is not a great thing. Sanjoy sir.